Moving ahead, children. So all these items appear inside the trial balance. Everybody well heard and understood. And closing stock appears outside. But there is a situation when closing stock appears inside the trial balance, children. Under what situation? When we have COGS. So children, when COGS is given, do you need to put purchase in the trial balance? No, do you need to put purchase return? No, sir. Do you need to put wages, carriage inward, no, opening stock, all in one has been constituted inside COGS. तो आपको क्वेश्चन बड़े इंटेलिजेंटली सॉल्व करना है, बड़ा स्कैरी होके क्वेश्चन आपको परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, सीओजीएस, क्लोजिंग स्टॉक सब दे देगा. तो इफ यू आर राइटिंग सीओजीएस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है. सो इफ अ नियर बाय नेबर comes to visit your house and hands over a wedding card of their son or daughter written with the family, do he need to invite you individually? With family पापा मम्मी को इनवाइट कर दिया तो your invitation is already included. समझ में आया कि नहीं? तो अब अंकल ने आपको घर पे देखा बट कुछ बोला ही नहीं, आप नाराज हो गए, हम नहीं जाएंगे शादी में, हमको तो इनवाइट नहीं किया गया है. पापा ने एक कान के नीचे लगाया, नालायक कार्ड दे गए, विद फैमिली लिख गए और क्या पैर पड़े दे रहे. समझ में आई बात? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इनविटेशन विद फैमिली. समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आई बात? चलिए. Yes, sir. So children, just opening the assignment sheet. Children, question number 14 visible? Children, question number 14 visible? Yes, it's visible. It says that prepare a correct trial balance. So children, we have COGS given to us, yes or no? We have closing stock. We have opening stock also, children, yes or no? Will we be putting it now when COGS already been? आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है. Do we have purchase here? होता भी तो ना लिखते. Do we have purchase return? दिया भी होता तो ना लिखते हम. Expenses how much, children? खैर ये तो गलत है इसलिए क्रेडिट पे है. तो expenses will be written, children, or will not be written? अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है. If it is a direct expense तो ये ऑलरेडी COGS में जुड़ा हुआ है. If it is an indirect expense तो COGS में नहीं जुड़ा. There is a concept in accountancy. Years ago we used to have a chapter called consignment accounts. अब वो चला गया है CA फाउंडेशन में. It was never there in CBSE syllabus. IC में वो करता था. Me being a student of IC मैंने पढ़ा हुआ है. वहां पे हमको टीचर एक लॉजिक बताते थे. In the absence of any information that expense is direct or indirect, बाइंग का है कि सेलिंग का है, हम उसे बाइंग का बोलते हैं. क्यों? इसका भी रीजन है. As per Sale of Goods Act in India, if the buyer and seller are agreeing to sell and buy goods, buyer will buy and seller will sell, and it is not agreed who's going to pay expense. शॉप से गुड्स बाहर तक निकालने का खर्चा सेलर का होगा और वहां से अपनी शॉप तक ले जाने का खर्चा बायर का होगा. समझ में आ गई बात? इस मैक्सिम पे वी कैन कंसिडर दिस एज डायरेक्ट. देख लेंगे अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया तो इसे इनडायरेक्ट मान लेंगे हम लोग. बट एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते. ओके, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. रेडी एवरीबॉडी? ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन. Mention all the items one by one. Don't write the values. Don't write the values. COGS, closing stock, debtor, creditor, fixed asset, sales, capital. Please do not write what is called as opening stock. Ignore this. Quickly, children, quickly. And don't write any value, children. Value एक भी मत लिखिएगा. सिर्फ items को एक एक करके लिख लीजिए. Very fast, children. Let's start. Yes, sir. Cost of goods sold is given on the debit side, so definitely it will be on the debit only. But closing stock and debtors, they will be shifted on the debit side. What was closing stock? 40,000 and debtors how much, children? Checkout question में होगा आपके पास 60. चलिए. Creditors well placed, fixed assets well placed, expenses मैं लिख रहा हूं, आप अभी मत लिखिए. Sales on the credit well placed, but capital should be on the debit, not well placed. Let's total the children.
150 plus 250, 3 lakh 320, or the 290 and 20 is what, children? Oh sorry, तो गायब करना था, sorry. 320 आ रहा है children. 2 lakh plus 90 plus 30 is 320. 150 plus 1 lakh 250, 320. Yes children, both sides is it coming 320? इसका मतलब ये एक्सपेंस इन्होंने इनडायरेक्ट माना है. Children, understood everybody how do we record closing stock? पक्का? चलिए quickly complete, moving ahead. Children, गलतियां हर इंसान से होती हैं. Do you agree with this? Yes, sir. और उन गलतियों का नतीजा किसको भुगतना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस को. समझ में आ गया? गलतियां हर इंसान से होती है, मतलब गलतियां अकाउंटेंट से हो सकती हैं. किस तरह की गलतियां हो सकती हैं? ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिए. बट सर ट्रायल बैलेंस गेट्स टैलीड. आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग अ टैलीड ट्रायल बैलेंस डजंट मीन की गलती नहीं होगी. देयर मे बी सम मिस्टेक्स. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सैलरी अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन? सेल्स plant and machinery 33, cash 20, purchase 120, and capital how much? 30,000. Thereafter we discovered something, that 10,000 worth of goods were sold, but they were not recorded. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे चलन. What is the journal entry for goods sold for cash and not recorded? Very good, excellent answer. It is cash account debit to sales. Children, had these been recorded earlier, cash would have been somewhat more. तो कैश में आप क्या करेंगे? प्लस. बट मैं आपको एकदम सीधा तरीका बताता हूं. कैश इन द जर्नल एंट्री sounds to appear on which side? And here also the balance is on which side, children? Simple as that. You will add this value with cash. समझ में आ गया? पक्का? Keep writing. Sales appearing in the trial balance at what value, children? I am asking at what value. The idiots are saying credit side. 175. And in the journal entry, its placement is on which side? And in the trial balance also it is placed where? So children, minus minus plus. What we'll do? Add. तो अगर साइड सेम होगा तो ऐड कर दीजिएगा, और ऑपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? सिंपल एज दैट. और सर जिसको जर्नल ना आता हो उसके पास अकाउंटिंग इक्वेशन की अकल होनी चाहिए. गुड्स वर्थ 5,000 bought for cash were recorded as 3. 5 में 5 के खरीदे, बट कितना रिकॉर्ड किया? कितना शॉर्ट रिकॉर्डेड है, नॉट रिकॉर्डेड है, लेस रिकॉर्डेड है. What would have been the journal entry for such transaction, children? Purchase account debit to cash. Purchase appears where in the journal? Sorry, in the trial balance, children. And in the journal entry also, side is same. What we'll do? Concept of compounding basically. Cash appears on which side in the journal entry? Hey Bhagwan. Journal entry, credit side. And in the trial balance, children? Debit side. So what we'll be doing? We'll subtract. समझ में आ गया? Sir, can't we pass the journal entries again? Okay, then prepare the ledger again, then balance again. नहीं सर, बड़ा टाइम लगेगा सर, इसी में सही कर लेते हैं. तो कुछ ऐसा है कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर कह रहा है सर्जरी की नौबत शायद ना आए, मैं मेडिसिन देके ठीक कर दूंगा. तो डॉक्टर इज गिविंग यू मेडिसिन. अगर इसके बाद भी ठीक ना हुआ तो फिर सर्जरी करेंगे. सेल्स वर्थ ₹50,000 were not recorded. Had it been recorded earlier, children, what would have been the journal entry? It's a creditors account debit. क्रेडिट पे गुड्स बेचे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 में फिर से 11th पढ़ने की, इडियट्स. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. इससे पता लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में, सिर्फ घर वालों की इज्जत रखने के लिए 11वीं में चलो पढ़ लेते हैं. कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, सॉरी नेगेटिव इंटरेस्ट.
Debtors are on which side in the trial balance? In the trial balance. In the trial. थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया. चलो. I repeated again, children. I repeated again. So, children, what we did with cash, please let me know. The first entry was what? Children, what was the first entry? Cash account debit to sales, isn't it? What was the second entry? Purchase account debit to cash. And what's the third one? Debtors account debit to sales. So, children, I asked everybody that in the trial balance, cash is on the debit side, but in the first journal entry, again, we happen to see it on the debit side only. Yes or no? Yes or no, children? So when the side is same, definitely what we'll be doing, we'll be adding. समझ में आ गया सबको? Children heard this well? So we added with cash, how much? 10,000. And thereafter, children, we added with sales also how much? 10,000. Goods worth 5,000 bought for cash were recorded as 3. कितना short record किया है? तो 2,000 cash गया जरूर है, but we have not recorded it. तो cash गया -2 and purchase left unrecorded, तो we'll add. Logic समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? Cash जा रहा है, but आपने बुक्स में आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको, तो you'll subtract. Journal entry के कॉन्सेप्ट से मैच कर लीजिए. Cash here is on which side? But in trial balance it is on which side? So reverse में minus. Last transaction, debtors to sales. Debtors are appearing in trial balance, children? No, sir. No. तो सर क्या करें?